7. Our country, India. India is a country of vast geographical expanse. In the north, it is bound by the lofty Himalayas, the Arabian Sea in the west, the Bay of Bengal in the east and the Indian Ocean in the south, wash the shores of the Indian peninsula. India has an area of about 328 million square kilometers. The north-south extent from Kashmir to Kanyakumari is about 3.200 kilometers. And the cast west extent from Arunachal Pradesh to Kutch is about 2.900 kilometers. The lofty mountains, the great Indian desert, the northern plains, the uneven plateau surface and the coasts and islands present a diversity of landforms. There is a great variety in the climate, vegetation, wildlife as well as in the language and culture. In this diversity, we find unity that is reflected in traditions that bind us as one nation. India has a population of more than 120 crores since the year 2011. It is the second most populous country of the world after China. The peninsula is a piece of land that 15 surrounded by water on three sides. Figure 6.1. Locational setting. India is located in the northern hemisphere. The Tropic of Cancer, 23 degrees 30 feet N, passes almost halfway through the country. Figure 7.2, from south to north. Mainland of India extends between 8 degrees 4 feet N and 37 degrees 6 N latitudes. From west to east, India extends between 68 degrees 7 E and 97 degrees 25 E longitudes. If we divide the world into eastern and western hemispheres, which hemisphere would India belong to? Due to great longitudinal extent of about 29 degrees, there could be a wide differences in local time of places located at two extreme points of India. As such, the difference between these 2 points would be of large countries which stretch extensively from east to west do not have a single standard time for the whole country. The USA and Canada have 7 and 6 time zones respectively. Do you remember how many time zones are there in Russia? नोटो। 7 हमारा देश भारत एक विशाल भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह ऊंचे हिमालय से घिरा हुआ है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों को धोते हैं। भारत का क्षेत्रफल लगभग 328 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्तर दक्षिण विस्तार लगभग 3.200 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक पश्चिम विस्तार लगभग 2.900 किलोमीटर है। ऊंचे पहाड़, महान भारतीय रेगिस्तान, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह और तट और द्वीप भू आकृतियों की विविधता प्रस्तुत करते हैं। जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवन के साथ साथ भाषा और संस्कृति में भी बहुत विविधता है। इस विविधता में हम एकता पाते हैं जो परंपराओं में परिलक्षित होती है, जो हमें एक राष्ट्र के रूप में बांधती है। वर्ष 2011 से भारत की जनसंख्या 120 करोड़ से अधिक है। ये चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। प्रायद्वीप भूमि का एक टुकड़ा है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। चित्र 6.1। स्थानिक सेटिंग भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 N देश के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है। चित्र 7.2 दक्षिण से उत्तर की ओर। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 N और 37 डिग्री 6 N अक्षांशों के बीच फैली हुई है। पश्चिम से पूर्व की ओर भारत 68 डिग्री 7 E और 97 डिग्री 25 E देशांतरों के बीच फैला हुआ है। यदि हम दुनिया को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों में विभाजित करते हैं, तो भारत किस गोलार्ध से संबंधित होगा? लगभग 29 डिग्री की बड़ी देशांतरीय सीमा के कारण
भारत के दो चरम बिंदुओं पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में व्यापक अंतर हो सकता है। इस प्रकार, इन दो बिंदुओं के बीच का अंतर होगा। क्या आप जानते हैं, बड़े देश जो पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए हैं, उनके पास पूरे देश के लिए एक ही मानक समय नहीं है। अमेरिका और कनाडा में क्रमशः 7 और 6 समय क्षेत्र हैं। क्या आपको याद है कि रूस में कितने समय क्षेत्र हैं? नोटो about 2 hours. As you have learned earlier, the local time changes by 4 minutes for every 1 degree of longitude. The sun rises about 2 hours earlier in the east, Arunachal Pradesh, than in the west, Gujarat. You have already read earlier why the local time of longitude of 82 degrees 30 has been taken as the Indian Standard Time. This meridian or longitude is also termed as the Standard Meridian of India. India's neighbors. There are 7 countries that share land boundaries with India. Find out names. लगभग 2 घंटे, जैसा कि आप पहले जान चुके हैं। स्थानीय समय प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए 4 मिनट बदलता है। पूर्व, अरुणाचल प्रदेश में सूर्य पश्चिम, गुजरात की तुलना में लगभग 2 घंटे पहले उगता है। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 के देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय क्यों माना जाता है? इस मध्याह्न रेखा या देशांतर को भारत का मानक मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। भारत के पड़ोसी भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले 7 देश हैं। नाम जाने। 7 Union Territories, Appendix 1. Delhi is the national capital. The states have been formed mainly on the basis of languages. Rajasthan is the largest state and Goa is the smallest state in terms of area. The states are further divided into districts. Physical divisions. India is marked by a diversity of physical features such as mountains, plateaus, plains, coasts and islands. Standing as sentinels in the north are the lofty snow-capped Himalayas. Himalaya mean the abode of snow. The Himalaya mountains are divided into 3 main parallel ranges. The northernmost is the Great Himalaya or Himadri. The world's highest peaks are located in this range. Middle Himalaya or Himachal lies to the south of Himadri. Many popular hill stations are situated here. Find out the names of 5 hill stations. The Shivalik is the southernmost range. The northern Indian plains lie to the south of the Himalayas. They are generally level and flat. These are formed by the alluvial deposits laid down by the rivers, the Indus, the Ganga, the Brahmaputra and their tributaries. These river plains provide fertile land for cultivation. That is the reason for high concentration of population in these plains. In the western part of India lies the Great Indian Desert. It is a dry, hot and sandy stretch of land. It has very little vegetation. To the south of northern plains lies the peninsular plateau. It is triangular in shape. The relief is highly uneven. This is a region with numerous hill ranges and valleys. Aravalli Hills, one of the oldest ranges of the world, border it on the northwest side. The Vindhyas and the Satpuras are the important ranges. The rivers Narmada and Tapi flow through these ranges. These are west-flowing rivers that drain into the Arabian Sea. The Western Ghats or Sahyadris border the plateau in the west and the Eastern Ghats provide the eastern boundary. While the Western Ghats are almost continuous, the Eastern Ghats are broken and uneven. Figure 7.3. The plateau is rich in minerals like coal and iron ore. To the west of the Western Ghats and the east of Eastern Ghats lie the coastal plains. The Western Crithynilla alluvial deposits. They are very fine soils, brought by rivers and deposited in the river basins. Tributary. A river or stream which contributes its water to a main river by discharging it into main river from either side. Figure 6.1. Do you know
The Ganga and the Brahmaputra form the world's largest delta, the Sundarbans.